A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11 accountancy. As you know that in the last few videos, we discussed a very important topic of the chapter bills of exchange. In the last video, we discussed accounting treatment of bills of exchange. In this topic, first of all, we discussed the journal entries in case of the honor of the bill. Honor of the bill का मतलब क्या होता है? When drawee paid the amount of the bill on due date. यानी जब drawee टाइम पे बिल का पेमेंट कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Honor of the bill. यानी we discussed the first situation when the bill is retained till the due date. In the last video, we see that a lots of option available to the holder of the bill. That is the first option when the bill is retained by the drawer till the maturity date. Number two, when drawer discount the bill from the bank. Number third, when drawer endorse the bill to the endorsee. And number four, when drawer send the bill to bank for collection. As well as you can see that there are basically two options available to the drawee regarding the bills of exchange. The first option is when drawee paid the amount of the bill on due date, that is known as the honor of the bill. And number second, when drawee does not pay the amount of the bill on the due date of the bill, that is a dishonor of the bill. So first of all, you know very well कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, the journal entries in the situation of honor of bill. It means हम journal entry डिस्कस कर रहे हैं जब बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर होता है और उसमें चारों कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लास्ट में आपको याद होगा इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एज वेल एज इन द ड्रॉवी. सो बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज रिवाइज द जर्नल एंट्रीज which already discussed in the last video. You know very well there are basically two parties of bills of exchange. The first one is a drawer and number second is a drawee. Two main parties, and you know very well there are basically three parties in the bills of exchange, but firstly we discuss only the two parties, that is drawer and drawee. So what is the first step of the drawer? You know very well. सबसे पहले drawer क्या करता है? The first of all, drawer sold the goods to the drawee. So in this situation he passed the journal entries, that is drawee account debit to sales. It means name of the drawee account should be debited and sales account will be credited. Okay. On the other hand, you can see that if drawer sold the goods on credit to the drawee, so in this situation drawee purchased the goods from the drawer on credit. So in this situation the journal entry will be purchase account debit to drawer. So the first entry you can see that. Okay, number second entry. Second entry which are related to the acceptance of the bill which are given by the drawee. So related the entries related to the second term which is a acceptance of the bill and acceptance given to the drawer. So in this situation you know very well bills of exchange make करेगा drawer, उसको accept कौन करेगा? drawee. So acceptance कौन given करेगा? drawee. और acceptance receive कौन करेगा? drawer. So the second entry which are related to the acceptance given, so the entry will be drawer account debit to cash, to bills payable. You know very well this is a bills payable. And for the drawer, you know very well he received the acceptance. So the drawer received the acceptance from the drawee for a certain month, and he in this situation drawer gave to the order to the drawee to pay a certain sum of money after a certain period. So the entry will be BR account debit to drawee. Okay. Number third entry, you know very well. We pass the journal entry which are related to the case number one. The case number one is honor of the bill. Honor of the bill is the situation when drawee paid the amount of the bill on due date. It means ये ऐसा situation है जहाँ पर drawee क्या करता है? ड्यू डेट पर पेमेंट कर देता है. किसको पेमेंट कर देता है? टू द ड्रॉवर. किस डेट पे पेमेंट करता है? ऑन द मैच्योरिटी डेट. एंड व्हाट इज मैच्योरिटी डेट? ये हम लोगों ने डिस्कस किया है.
What is the formula of maturity date? You know very well. The bill's date plus duration plus 3 days of grace. So at the time of maturity, drawer paid the amount of the bill to the drawer. So in this situation, the entry will be BP account debit, that is a bills payable account debit to cash. So drawer ने payment किया to cash, and who received the payment? That is drawer received the payment. So the entry will be cash account debit to BR. Okay, so this is very simple and very basic entry which are passed when the bill is retained till the due date by the drawer. So the following entry will be passed in the books of drawer and following entry will be passed in the drawer. Okay, and this is a situation, the positive situation in case of the owner of the bill. Let's we take a one example for your convenient. So let's we take a one example, and you can see that on your screen the example which are related to the retaining the bill till the due date. So in this situation you can see that the question number 3, according to the question number 3, you can see that on 1st January 1994 Ajay sold goods to Bhushan for rupees 10,000 and Ajay draws a bills of exchange for 2 months, and next things, for the amount due for which Bhushan accept and return it to Ajay. Bhushan met the bill on the due date, passed journal entries in the books of Ajay and Bhushan. So you can see that in this question there are basically two parties in this question. The first person is Ajay and second person is a Bhushan. So अजय ने गुड सोल्ड किया भूषण को, एंड अजय ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉस किया 2 महीने का, एंड जिसे भूषण ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड फिर उससे रिटर्न किसको कर दिया? अजय को. भूषण ने ड्यू डेट पे बिल को मेट मतलब पेमेंट कर दिया उसका. पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय एंड भूषण, यानी आपको एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ अजय एंड भूषण. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, first of all you have a proper knowledge about who's drawer and who's drawee. So you can see that if we are talking about the knowledge of the drawer and drawee, so first of all we create a line which shows the discrimination between the drawer and drawee. Okay, so let's we first of all we make a line. Suppose this is the first page of my copy and this is the second page of my copy, and you can see that there are basically two parties. So first parties will be known as the Ajay. पहली पार्टी का क्या नाम है? That is Ajay, and the दूसरी पार्टी का क्या नाम है? That is Bhushan. And according to your knowledge, you know very well, जो goods sold करता है वो कौन होता है? Who's a drawee? Wrong. Who's a drawer? And a person who purchased the goods, he is a drawer. And you can see that इस पूरे सिचुएशन में आप ये भी समझ रहे होंगे कि ड्रॉवर ड्रॉवी के साथ साथ एक और पहचान है इनकी, वो ये है कि ये बिल को क्या कर रहा है? मेक कर रहा है. लिखा होगा अजय ड्रॉज अ बिल, मेकर ऑफ द बिल, एंड हु इज एक्सेप्टर? दिस इज भूषण. सो भूषण एक्सेप्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो भूषण इज अ ड्रॉवर. सो आप दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हु इज ड्रॉवर एंड हु इज अ ड्रॉवी. एंड आफ्टर दैट यू विल पास द जर्नल एंट्रीज. So you know that on 1st January 1994 अजय ने गुड्स सोल्ड किया और भूषण ने गुड्स को परचेस किया. अगर अजय सोल्ड करेगा गुड्स को तो यू नो वेरी वेल भूषण इज अ परचेजर. सो फॉर रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ जनरल, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द जनरल. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जनरल. The format of the journal is date, particular, LF, amount debit and amount credit. And what is the format of the journal in the books of drawee? It is the same: date, particular, LF, amount debit and amount credit. So please I request to all the students कि please make a proper format in your copy, and after that you will record all the transaction in the books. सो ये नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्मेट अच्छे से नहीं बनाया और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो.
सो ये बात आपको याद रखनी है कि यू विल रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्मेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन जिसकी बुक में आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो. इसमें भी आपको ये बताना पड़ेगा किसकी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो. आप चाहो तो उसमें पूरे सेंटेंस लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ अजय ब्रैकेट में ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ भूषण दैट इज ड्रॉवी. और सेंटेंस लिख सकते हो, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय ब्रैकेट में ड्रॉवर, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भूषण ब्रैकेट में ड्रॉवर. अब मैंने एक फॉर्मेट बना लिया. एंड आफ्टर दैट वी विल put the information in the format. You can see that in the left hand side, that is date, particular, amount debit and amount credit. In the other hand, you can see that in the books of Bhushan we write down the particulars, LF, amount debit and amount credit. मैं ये साथ साथ इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ बिकॉज यू कैन सी दैट, क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर ऑफ दिस चैप्टर. सो यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट कि ड्रॉवर में जो भी एंट्रीज होंगी उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री ड्रॉवी में होगी, क्योंकि ड्रॉवी सेल करेगा तो ड्रॉवर क्या करेगा, परचेस करेगा. या फिर इन अदर वर्ड्स में यू कैन से इफ ड्रॉवर मेक अ सेल to the drawee, so the drawee will be purchased. So you can see that on 1994 January 1, the first transaction you can see that is Ajay sold goods to Bhushan. So what is the journal entry in the books of Ajay? That is Bhushan account debit to sales. And what is the amount? You know very well what is the amount. Amount is the 10,000, 10,000. And it is a narration. You know very well what is the narration. Narration means being goods sold on credit. On the other hand, you can see that in the books of Bhushan, when we are talking about in the books of Bhushan, so you can see that the date will be 1994 January 1. On the same date Bhushan will be purchased, so the entry will be purchase account debit to Bhushan, sorry, to Ajay, whose अजय की बुक्स में भूषण का नाम राइट डाउन होगा और भूषण के बुक में अजय का नाम राइट डाउन होगा. बिकॉज यू नो वेरी वेल, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि व्हेन एनी गुड्स सोल्ड टू द ड्रॉवर, सोल्ड गुड्स बाय ड्रॉवर टू द ड्रॉवी, सो द एंट्री विल बी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स. एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी that is purchase account debit to drawer, and amount will be 10,000, 10,000. Okay, and the narration you know very well. इसके बुक में नरेशन क्या होगा, bring goods purchase. ठीक, okay. After the completion of the question, I will revise all and each and every transaction separately. Don't worry. So अभी क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसने सेल किया, इसने परचेस किया. Thereafter you can see that उसी दिन 2 महीने का एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसाइड किया गया. यानी ऑन जनवरी 1 1994 को सेम डे पे आज भूषण ने एक बिल एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके इसको दे दिया अजय को. सो द एंट्री विल बी Ajay account debit to bills payable. You can also write down the bills payable as a BP. What is the amount? That is 10,000 and 10,000. Okay, and narration will be, you know very well, acceptance given for 2 months. How much, how many times? That is 2 months. And who has received the acceptance? Ajay. Ajay जब receive किया, so the entry will be BR account debit to भूषण, that is 10,000. 10,000 का पैसा अभी तो नहीं दिया उसने, उसने उसके लिए एक बिल एक्सेप्ट कर लिया. इसने साइन करके बिल किसको दे दिया, उसको पे कर दिया. एंड देयर आफ्टर यू कैन सी दैट उसके बाद क्या करना है हमें, एट द एंड ऑफ द यू कैन सी दैट लाइन भूषण मेट द बिल ऑन द ड्यू डेट. जो ड्यू डेट है इट मीन्स द मैच्योरिटी डेट के दिन भूषण ने बिल का पेमेंट कर दिया. तो बिल का पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश. बिल का पेमेंट कर दिया. बट प्लीज लिसन केयरफुली, जब बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर भूषण करेगा तो अजय भी उसको रिसीव करेगा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पे अजय ने कुछ नहीं किया बिल के साथ, ड्यू डेट तक वेट किया है उसने क्योंकि कुछ नहीं लिखा है. इसका मतलब अजय ने वेट किया होगा ड्यू डेट तक कि बिल का पेमेंट मिल जाए. सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू BR 10,000,
10,000, and narration you know very well, amount received on due date, and in this book amount paid on due date. And one more thing for your knowledge, that is what is the date of the transaction. You know very well, बिल लिखा गया था 1 जनवरी को, ड्यू डेट कितने मंथ्स के लिए रखा गया था, 2 मंथ्स के लिए। जो एक्सेप्टेंस गिवन हुई थी, भूषण ने जो एक्सेप्टेंस दी थी कितने महीने के लिए दी थी, 2 महीने की। इसने एक्सेप्टेंस रिसीव कितने के लिए किया होगा, 2 महीने का। इसका मतलब बिल का ड्यू डेट क्या होगा, सन निकालना पड़ेगा। हाउ विल वी फाइंड द ड्यू डेट, यू नो वेरी वेल, द बिल स्टेट प्लस ड्यूरेशन प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। सो जनवरी 1 से 2 महीने काउंट करो, फरवरी 1, मार्च 1, एंड 3 और ऐड कर लो, मार्च 1 प्लस 3 डेज, दैट इज मार्च 4। सो पेमेंट कब होगा बिल का, दैट इज 1994 मार्च 4, और रिसीव भी कब होगा, 1994 मार्च 1। सो मैंने अभी तो इस क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व किया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सेपरेटली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम दोनों एंट्रीज एक साथ नहीं पास करेंगे। ठीक है, आपको दोनों एंट्रीज एक साथ, दोनों की बुक में एक साथ एंट्री पास नहीं करनी है, आपको 1 बाय 1 एक बार अजय की बुक में एंट्री पास करनी है, देयर आफ्टर उसके बाद भूषण में। सो यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दी what is the entries should be passed in the books of Ajay and which kind of the entry should be passed in the Bhushan. So let's revise all these entries. First of all, we write down the name of the parties, that is Ajay, and who's Ajay? Ajay is a drawer. According to the information given in the question, you can see that the information given in the question related to the Ajay is a seller, as well as Ajay received the acceptance, as well as Ajay draws a bill. So इन सारी लाइन्स से आप ये क्लियर कर ले रहे हो, Ajay is a drawer. So first of all, we write down the name of the Ajay and we write down the full sentence in general entries in the books of Ajay, bracket में drawer in bracket, and thereafter we prepare a format, date, particulars, LF, amount debit and amount credit. Thereafter you can see that all the transaction which are related to the Ajay ने क्या क्या किया वो आप नोट डाउन करो। पहले अजय ने क्या किया, गुड सोल्ड किया, गुड सोल्ड करने की एंट्री जनवरी 1 1994, किसको सोल्ड किया, भूषण, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। देयर आफ्टर अजय ड्रॉज अ बिल फॉर 2 months फ्रॉम द अमाउंट ड्यू विच भूषण एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू अजय। इट मीन्स अजय रिसीव एक्सेप्टेंस, so the what is the entry related to the received acceptance, that is BR account debit to Bhushan, and amount will be 10,000 and 10,000. And you can see that Bhushan met the bill on the due date, भूषण ने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया। सो यू नो वेरी वेल, भूषण ने अगर ड्यू डेट पे पेमेंट किया होगा तो किसको किया होगा, अजय को किया होगा। सो हु इज द रिसीवर, अजय। सो अजय को पैसा मिला होगा, सो अजय के बुक में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू BR। एंड कब पेमेंट किया, ऑन ड्यू डेट। एंड यू नो वेरी वेल ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, हाउ विल कैलकुलेट द ड्यू डेट, बिल स्टेट दैट इज जनवरी 1 प्लस 3 months plus 3 days of grace. And what is 3 days of the grace, you know very well, according to negotiable instrument act 3 days of extra आपको मिलता है। So according to the calculation you can see that जनवरी 1 में जब 3 महीना ऐड करोगे तो होगा फरवरी 1, मार्च 1, अप्रैल 1, सॉरी फॉर 2 months, सॉरी फॉर 2 months। सो जनवरी 1 में जब आप 2 months ऐड करोगे तो फरवरी 1, मार्च 1 प्लस 3 days, दैट इज मार्च 1 में जब 3 days ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज मार्च 4। So the payment of the bill on March 4. So you can see that the entry is related to the Ajay. Now we will move to the entries related to the Bhushan. Okay. So you can see that in the question, so Bhushan is a drawee. So first of all, Bhushan purchased the goods from Ajay. So on January 1, 1994, Bhushan passed the journal entry in the books of in his book, that is purchase account debit to Ajay, that is 10,000 and 10,000. Thereafter you know very well, according to the question, भूषण एक्सेप्ट द बिल, भूषण ने बिल को एक्सेप्ट किया। सो यू नो वेरी वेल, जब कोई भी पर्सन बिल को एक्सेप्ट करता है, सो द एंट्री विल बी अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ओके, सो द एंट्री विल बी 10,000 and 10,000 फॉर अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल फॉर 2 months, एंड द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज जनवरी 1 1994। एंड आफ्टर डेट ऑन मार्च 4 इट इज अ ड्यू डेट, ड्यू डेट पे भूषण ने पेमेंट कर दिया, सो द एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भूषण ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा क्या होगा, बिल्स पेबल होगा, और ड्रॉवर के लिए हमेशा बिल क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, बिकॉज ड्रॉवर को उस बिल का पेमेंट मिलेगा, दैट्स वाई ही विल राइट द बिल्स अकाउंट एज अ बिल्स रिसीवेबल, एंड ड्रॉवी को बिल का पेमेंट करना पड़ता है, दैट्स वाई ड्रॉवी राइट डाउन द नेम ऑफ बिल एज अ बिल्स पेबल, क्योंकि उसे पेमेंट करना है। सो ये बेसिकली एंड कॉमन चीज है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
So let's we take one more example and I will solve one by one all the journal entries. So you can see that the next question on your screen, that is the next question is question number 5. On February 6, 2006, A goods sold goods for rupees 1 lakh to B. B paid 40% immediately, on which A allowed a cash discount of rupees 500. For the balance, A drew a new bill on B payable after 30 days. Due date of bill was public holiday and the bill was made as per the provision of Negotiable Instrument Act. Generalize the above transaction in the books of A and B. So इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है बट इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का जो ए में जर्नल एंट्रीज है वो मैं पास करूंगा और बी की जर्नल एंट्रीज आपके लिए होमवर्क होगा. सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू द होमवर्क. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. I will pass the solution regarding the journal entries in the books of A, and for you it is an homework to pass the journal entries in the books of B. मैंने पहले क्लियर किया, ए की जर्नल एंट्री मैं करूंगा, बी की जर्नल एंट्री आप घर पे खुद करोगे और फाइंड आउट करोगे कि आपने कितना सही किया और उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. सो यू कैन सी दैट अब मुझे फाइंड आउट करना है कि हु इज अ ड्रॉवर एंड हु इज ड्रॉवी. और इतना कॉमन सेंस आपके पास डेवलप हो चुका होगा कि ए गुड सोल्ड कर रहा है एंड बी क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है. एंड देयर आफ्टर बिल भी बना है, तो ड्रॉ किसने किया है, ए ने, और एक्सेप्ट किसने किया है, बी ने एक्सेप्ट किया है. पेमेंट किसने किया है, बी ने पेमेंट किया है. ओके, सो इन सारी स्टोरी को पढ़ने के बाद वी ड्रॉ कंक्लूजन दैट इज ए इज अ ड्रॉवर वेयर इज अ बी इज अ ड्रॉवी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ A, who's a drawer. So first of all we make the format as per the requirement of the question. The format you know very well. What is the format of journal entries? That is date, particular, LF, amount debit and amount credit. So the date, particulars, LF, amount debit and amount credit. So this is the format and you know very well. First of all we write down the name, journal entries in the books of A, that is the drawer, and thereafter we write down the heading, that is date, particulars, LF, amount debit and amount credit. Okay, so let's we start the solution. So what is the solution? You can see that on February 6, 2006 A ने गुड सोल्ड किया टू बी, सो द एंट्री विल बी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स. एंड व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट विल बी 1 lakh. Okay, one by one, and thereafter you will write down the narration. A goods sold to A sold goods for rupees 1 lakh to B, and thereafter you can see that B paid 40% immediately, on which A allowed a cash discount of 500. B ने तुरंत कितना रुपए दिया? 40%. 40% means 1 lakh का 40%, that is 40,000. and you know very well it is a discount allowed. Discount allowed हमेशा क्या होता है? That is a debit, which is also debit. and who's a giver? That is B. So B को कितना देना था? That is 40% of 1 lakh. 40% of the 1 lakh is 40,000. and how much the amount of discount? That is 500. 40,000 में 500 discount हो गया, so the remaining amount is 39,500 received by B in full settlement of 40,000. 40,000 वो दे रहा था लेकिन उसने उस पर 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया on the same date. and you can see that according to the question कि B क्या कर रहा है, 40% तो इमीडिएटली दिया, बाकी 60% यानी 1 लाख पे 40,000 पे कर दिया, बाकी कितना बचा? 60,000. उसके लिए एक बिल लिख रहा है और उस बिल को एक्सेप्ट करके किसको दे दे रहा है? ए को दे दे रहा है ऑन द सेम डेट. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द जर्नल एंट्री? दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी. फॉर व्हाट? फॉर हाउ मच अमाउंट? दैट इज 60,000 and 60,000. okay, and thereafter you know very well, you can see that the question thereafter, that is for the balance A draw a bill on B payable after 30 days. यानी जो बिल रिसीव किया है किसने?
ए ने जो बिल रिसीव किया है दैट इज फॉर द अमाउंट ऑफ ₹60,000, उसका पेमेंट कब होना है? आफ्टर 60 डे, आफ्टर 30 days. And at due date of the bill was public holiday. So what is due date of the bill? So पहले हम लोग उस पर भी concentrate कर लेते. The due date of the bill will be February 6, 2008, 2006, and 2006 is not a leap year. You know very well. So February 6 में अगर आप 30 days ऐड करो तो कितना दिन हो जाएगा? पहले तो फरवरी में 28 डेज होते, तो 22 डेज तो आपके फरवरी में हो गए, क्योंकि फरवरी 6 में अगर 22 डेज ऐड करेंगे तो 28 फरवरी हो जाएगी और फरवरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी भी आपको कितने डेज की जरूरत है? 30 में से 22 डेज तो फरवरी में निकल गए, अभी भी कितने दिन बचे हैं? 8 दिन। 8 दिन कब कितने के होंगे? मार्च के होंगे। ओके, सो ये हो गया पूरा 30 डेज, यानी 8 मार्च को आपका 30 डेज कंप्लीट हो रहा है। और यू नो वेरी वेल उसमें भी आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हो, यानी बिल स्टेट प्लस ड्यूरेशन प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो 8 मार्च में जब 3 डेज ऐड करोगे तो क्या होगा? 11 मार्च। 11 मार्च इज अ ड्यू डेट ऑफ द बिल, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्लियर लिखा है ड्यू डेट ऑफ बिल वॉज पब्लिक हॉलीडे, यानी जो बिल का ड्यू डेट है वो पब्लिक हॉलीडे है। एंड यू नो वेरी वेल पब्लिक हॉलीडे के संबंध में हमें ये पता है कि पेमेंट कब होता है? आफ्टर अ ड्यू डेट या बिफोर द ड्यू डेट? बिफोर अ ड्यू डेट। इट मीन्स अगर हम 8 मार्च में 3 दिन और ऐड करें डेज ऑफ ग्रेस का, सो द ड्यू डेट विल बी 11 मार्च। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले पेमेंट होता है, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद। सो 11 मार्च का एक दिन पहले क्या आएगा? मार्च 10, 2006. So the due date of the bill according to the negotiable instrument act is the 10 March. So I hope ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब पेमेंट तो रिसीव हो जाएगा ड्यू डेट पे, तो ड्यू डेट पे क्या रिसीव होगा? पेमेंट। सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 60,000, 60,000, and now quotient will be complete. You will also add the total at the end of the quotient. So after the completing of this quotient, let's we revise all the entries passed in the books of A. So you can see that on your screen is that first of all we write the heading journal entries in the books of A, and whose A is a drawer, and thereafter we prepare a format date, particular, LF, amount debit and amount credit. And you know very well A is a drawer. So the first transaction, as you can see that according to the quotient, is 2006 February 6 goods sold, and goods sold to the B. So the entry will be B account debit to sales, that is 1 lakh and 1 lakh. Thereafter you know very well 40% of the bill, 40% of the amount received by paid by the B, and A allowed a discount of ₹500. सो 1 लाख का 40% कितना हुआ? 40,000। उसमें से डिस्काउंट कितना अलाउ करना पड़ा ए को? 500, तो उसको मिला कितना होगा? 39,500, क्योंकि डिस्काउंट जो अलाउ करता है इट इज एन एक्सपेंस फॉर, और जो रिसीव करता है उसके लिए इनकम होता है। सो बी के लिए डिस्काउंट रिसीव होगा और ए के लिए क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड होगा। ओके, सो 40,000, यानी उसे 40,000 का पेमेंट कर लिया, लेकिन पेमेंट कितना करना पड़ा उसे? 39,500। ये 500 रुपये का जो लॉस हुआ है वो ए को हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। हमें बस इस चीज को शो कराना है कि बी ने 1 लाख में से 40,000 पे कर लिया, अब बचा कितना? 60,000, उसके लिए उसने बिल ड्रॉ कर लिया। सो द एंट्री विल बी रिलेटेड टू द ड्रॉस ऑफ द बिल, दैट इज बी आर अकाउंट डेबिट टू बी. You know in very well what is the entries regarding the acceptance received, that is bills receivable account debit to B 60,000. And according to this question you can see that the due date of the bill was a public holiday, यानी जो बिल का ड्यू डेट था वो पब्लिक हॉलीडे था। फरवरी 6 में जब हम लोग ने 30 डेज ऐड किया, सो आया वो मार्च 8, और मार्च 8 में आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस और ऐड करना पड़ता है, तो ड्यू डेट हो जाती है मार्च 11। बट यू नो वेरी वेल मार्च 11 इज अ पब्लिक हॉलीडे, March 11 was a public holiday, so in this situation due date of the bill will be taken as a 1 day before, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी है। तो एक दिन पहले के लिए यू कैन सी दैट द एंट्री विल बी मार्च 10। मार्च 11 से ड्यू डेट क्या हो जाएगी बिल की? दैट इज मार्च 10, एंड वी रिसीव अ कैश फ्रॉम द बी। व्हाट इज द टोटल ऑफ
Total of the journal entries, that is 2 lakh 60,000, and same in this situation, 2 lakh 60,000. So it is a whole solution of the question number 5th, and homework for you, that is you will pass the journal entries in the books of B, that is Drawby, with the help of these entries. So I hope today we enjoyed a lot, and we can see that a lots of entries uh, in the books of drawer as well as in the books of B, when drawer or holder of the bill retain the bill till the due date. And you can see that the two important numerical question. In the next video we will come to the another topic of this chapter, that is a when drawer discount the bill from the bank, and thereafter we will discuss the upcoming cases. So I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot. Good day.